Hello and good evening to today's session. In today's video, we will be discussing about the decodifying VARC syllabus for the CAT examinations. I hope that you must have heard our previous videos where we have discussed uh, about the CAT process. So in today's session, we will further decodify it on the sectional basis. So my objective here is that in subsequent videos, we will be uh, decoding, decoding the all the three sections of the CAT syllabus, right? So for the decodification, what is required, what kind of questions are being asked in particular questions, where you have to emphasize, where you have to emphasize that we will be discussing. So for today's session, you must be with us for till the last of the session. Now let's start. अगर VRC का syllabus देखें तो we can see that there are two components: verbal ability and reading comprehension. About reading comprehension, I have already discussed in my previous videos, and you can watch those videos for further information about the reading comprehension. The objective to make the separate video on the reading comprehension was that the reading comprehension is very important. I would say a vital component of the CAT process. 70% of this syllabus, 70% of the questions in the VARC sections are from the reading comprehension. That's why I made a separate video on that, a comprehensive study about the reading comprehension. If you haven't watched that, please watch that. Please go into the playlist or our YouTube channel, that is Energy Test Prep, and you see that video and gain the experience, gain the knowledge about the reading comprehension. In today's session, we will be uh, discussing about the verbal ability and reading comprehension and decoding the syllabus for the CAT, especially for the CAT, right? CAT examination, that is common aptitude uh, test. And so in the CAT, in the VARC section, we have the first, we have the logical reasoning section. It is about the verbal ability, so logical reasoning questions. Then we have the parajumbles, then the summary based question, then contextual uses. There were some times in some years the questions or idioms was also asked, and in some of the years there were one word substitutions. Then the sentence completion was kind of questions were there, misfit, yeah, or either out of context sentence, paragraph completion, and vocabulary. This is just a brief summary. We will now discuss one by one about all these subtopics, right? So let's discuss first about the parajumbles. See, if I will anything which is certain nowadays after the reading comprehension, there this is parajumble. That's why I am taking it first, right? So parajumbles में क्या है कि 4 से 5 एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 से 5 उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं. अगर वो ऑप्शंस आप एक सीक्वेंस में लगाएंगे, if you place those options in a sequence, then that will produce a meaningful paragraph or meaningful passage. That's all about the parajumbles. So parajumbles, jumbling is there, right? You must be recall well you were playing those play cards in your childhood, जहाँ पर हम वेरियस कार्ड्स को एक दूसरे में लगाते थे टू मेक अ होल पिक्चर, राइट? तो उसी प्रकार का यहाँ क्या है कि पैराजम्बल्स में 4 से 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे एंड वो 4 to 5 आंसर्स को आपको सीक्वेंस में लगाना होगा. So these type of questions are nowadays asked. Then the logical reasoning based questions are being asked. Logical reasoning में कि एक sentence दे दिया गया, there are some sentences are being given, and then reasoning based questions कि ये sentence से क्या match करता है, और there can be inference based questions in the reading comprehension itself कि what is the inference
what can be the inference to the passage, something like that. So that is also comes under the logical reasoning. तो मिक्स भी कर सकता है वो कि लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों को मिक्स करके आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि पहले की तरह की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ फ्रेजेस आ रही हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्ट रिलेटेड टू पैसेज आ रहे हैं. अभी वो टाइप का चेंज थोड़ा पैटर्न हो गया है. The questions are nowadays are coming much more related to the verbal reasoning and reading comprehension combined together. So you must remember that and practice those kind of questions very thoroughly. Then there are summary based questions which are mostly related to the your reading comprehension section, where I have already said the summary based questions are nothing but where the paragraph is given and reading in paragraph they will ask the gist of the passage. Remember here the gist or summary will be asked in 1 or 2 lines. So 1 and 2 lines will be there. It's not theta kind of thing. It's MCQ now. Most of the times it's MCQ kind of question. That in MCQ based questions में हमको summary already दी है और उस summary को और sometimes they accept the word best. They accept the suffix best also, or most logical or something like that. So most logical summary, best summary, something like that. So it is related to the central idea of the रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही समरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. फिर कॉन्टेक्चुअल यूजेस आ रहे हैं, मतलब एक वर्ड दिया हुआ है उसका यूजेस एंड समथिंग लाइक दैट. फिर इडियम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रेजेस आ रहे हैं. तो उस फ्रेज में दिया हुआ कि एक फ्रेज दे दी गई है and what does this phrase mean, what does this particular word mean. That kind of questions are also being asked. These questions can be asked, these kind of questions come the questions come under the vocabulary based questions. तो contextual uses में भी I think आप जानते ही होंगे, contextual uses में हमारे synonym आते हैं, antonym आता है. मतलब एक वर्ड पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज, तो क्या करेंगे वहां पर कि एक वर्ड को हाईलाइट कर देंगे समटाइम्स, राइट, ड्यूरिंग द पैसेज itself, या फिर हाईलाइट नहीं करेंगे और उस नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, दोनों टाइप का आ सकता है. यू मस्ट प्रिपेयर फॉर बोथ टाइप ऑफ थिंग्स. तो क्या करेंगे कि पैराग्राफ दे दिया और उसको पैराग्राफ मतलब 2-3 पैसेज का भी कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, या सिंपल एक पैराग्राफ 4 to 5 लाइंस का हो सकता है, और एक वर्ड दे दिया. अब वर्ड को मान लिया कि वर्ड का मीनिंग ऐसे नहीं पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज डायरेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड. सपोज the word can be it can be like egregious, right, or it can be like eliminating. ठीक है, तो eliminating word दे दिया, तो eliminating के मतलब एलिमिनेटिंग मतलब रिमूवल भी हो सकती है. एलिमिनेशन प्रोसेस मतलब रिमूवल से रिलेटेड है, पर वो क्या है कि उसका यूज वो दे देंगे कि इन विच कॉन्टेक्स्ट दिस वर्ड इज बीइंग यूज्ड इन द पैसेज. तो पैसेज में आपको जाके वो पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और वो पैराग्राफ पढ़ के फिर, क्योंकि रिमूवल से रिलेटेड वहाँ 3 से 4 MCQs होते हैं, तो रिमूवल और उसके क्लोज मीनिंग्स होंगे. ठीक है, तो आप कहेंगे रिमूवल और समथिंग लाइक दैट विल बी गिवन देयर. तो उस पैसेज में जो क्लोजेस्ट मीनिंग, जो वर्ड जो है वो किस पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तो वो कॉन्टेक्चुअल यूजेस में आता है. इट्स आल्सो vocabulary based question. That's why I say in my previous videos that read more and more, so that you understand the meaning of the words in the contextual situations, right? Context, किस context में वो word use हुआ है, right? So there are many words which can be used, which can even produce different meaning in different situation, right? So you already had in your English classes, right, when you were in 10th grade, that many words when used in different situations, they give different meaning, right? So that's why the contextual based questions can be asked. So that is one thing. Then one word substitution can be there. There can be a phrase or something like that, and they will ask you, give a word for this. What does this phrase means?
ओके, सो मतलब एक लाइन दे दी, दो लाइन दे दी, दो लाइन दे के और उससे मतलब वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी दिया हुआ है या सेंटेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, वो सेंटेंस को आपको किसका ये मीनिंग है, उसका अर्थ क्या है, हिंदी में हम कहते हैं ना कि इसका अर्थ क्या है, तो वो अर्थ वाला पोर्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको वर्ड देना है और वर्ड के 4 एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो वो टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो क्योंकि कैट का पैटर्न एक जैसा नहीं रहता, यू ऑलरेडी नो, मे बी नोइंग दिस, कि कैट इज चेंजिंग, दीज आर सब टॉपिक्स which I can summarize on the basis of some of the last year's papers. बट ऐसा नहीं है कि कैट में हो सकता है पैराजम्बल्स अभी आ रहे हो, पैराजम्बल्स फिर उस टाइम बाद वो हो सकता है पैराजम्बल्स को किसी और चीज से रिप्लेस कर दें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कैट का पैटर्न चेंज होता रहता है, बट ओवर द इयर्स वी हैव ऑब्जर्व दैट द पैटर्न इज चेंजिंग और पैटर्न इज रोमिंग अराउंड दीज टॉपिक्स, कि कभी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आ गए, कभी पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस आ गए, कभी कॉन्टेक्चुअल यूजेस के एक दो क्वेश्चंस पूछ लिए, कभी सेंटेंस कंप्लीशन के पूछ लिए या इन सब के पूछ लिए, कभी पैराग्राफ कंप्लीशन पूछ लिए। तो ऐसे सब सब्जेक्ट्स की, ऐसे सब टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर नॉट नेसेसरली कि इन सब टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनसे आ भी सकता है, एक क्वेश्चन भी आ सकता है और 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं एंड 0 क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो रिमेंबर दैट दीज थिंग्स। देन सेंटेंस कंप्लीशन में एक मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, ठीक है। जैसे कि वर्ब का फिलिंग, राम गोज टू स्कूल, मान लो एक पूरा सेंटेंस है, तो उन्होंने क्या किया कि गोज की जगह अंडरलाइन कर दिया एंड वहाँ गोज लिख दिया, गोइंग लिख दिया, वेंट लिख दिया एंड नन ऑफ दीज एक ऑप्शन दे दिया। तो देन यू हैव टू सेलेक्ट द सेंटेंस, यू हैव टू कंप्लीट दैट सेंटेंस। या फिर 2 से 3 लाइन के भी सेंटेंस अभी देखे जा रहे हैं कि 2 से 3 लाइन के सेंटेंस पूरा फ्रेज दे दिया और उसमें एक जगह कोई खाली कर दी, छोड़ दी है, मे बी वर्ब, मे बी एडवर्ब, मे बी एडजेक्टिव, प्रोनाउन और प्रोनाउन में भी दे आर, राइट, प्रपोजिशन में भी दे आर। तो प्रपोजिशन से तो कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इनसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पर प्रपोजिशन से भी पूछे जा सकते हैं, आते हैं, पहले आए हुए हैं और कोई और पेपर्स में आ रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि दिस ईयर द कैट एडमिनिस्ट्रेटर चेंजेस their mind and they say that preposition based questions भी आ रहे हैं जनरली। ग्रामर कुछ ईयर्स से ग्रामर पे वेटेज बहुत कम हो गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में ग्रामर पे ज्यादा वेटेज था, तो इसलिए हमको उनके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इट इज जनरल डेली यूज ग्रामर, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरा रेन एंड मार्टिन उठ के लेके पढ़ना है। अगर आपकी ग्रामर बहुत कमजोर है, देन अगेन आई विल एडवाइज यू कि आप जाएं, रेन एंड मार्टिन उठाएं और उस पर वर्क अपन करें। बट इफ यू कैन कंटिन्यूअसली, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश एंड मीन्स यू कैन स्पीक वेल, यू कैन find the errors in sentences uh, uh, with I think more than 90-95% accuracy, then you need not to specifically go to Wren and Martin and read from there. But if you are not, then please read it, right? So that thing maybe there, the sentence completion, I hope that. फिर misfit या out of context sentence, it's again reasoning based question, like we can classify it as a reasoning। तो ये आपकी vocabulary और reasoning दोनों को check कर रहा है। Though I have written the vocabulary in the last, but ये vocabulary को भी चेक कर रहा है। vocabulary को कैसे चेक कर रहा है कि अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम तो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नहीं बता पाओगे कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस क्या है। और अगर आपकी रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स आई वुड से नॉट up to the mark or above average, like above average, so then you may not be able to find out, it's kind of an odd one out sentence कि कौन सा मैच नहीं कर रहा। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंसेस आ रहे हैं या मिसफिट भी उसको बोलते हैं, कि कौन सा कंटेक्स्ट नहीं हो रहा है। जैसे रीजनिंग में पहले आ रहा है कि रीजनिंग में
आपने देखा होगा कि पूछा जाता था कि 4 सेंटेंसेस दे देंगे या 4 टर्म्स दे देंगे, दिस इज रिलेटेड टू दिस, देन दिस मस्ट बी रिलेटेड टू दिस इन अ वे, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पूछ रहे हैं कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है जो इससे नहीं है, कि पता चला बातचीत हो रही है समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी, और एक सेंटेंस रिलेटेड, it is not ethics in politics, it is related to some other things, right? Ethics in your personal life, right? तो उससे रिलेटेड सेंटेंस है तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंटेंस हो गया, क्योंकि रिलेटेड या फिर बात हो रही है कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन दिस सेक्शन, एजुकेशन सेक्शन, और उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो वो सेंटेंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो टाइप के, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू the wider picture, not necessarily from the CAT, because previous year questions are important, but we have to widen our horizon also. When we are preparing for the CAT, we have to think beyond the line, and that's why that's you must have heard some people saying the CAT is uncertain. So my job is to prepare you for that uncertain, make you certain for that uncertainty, right? So that's my job. That's why when I talk about the this decoding of the CAT syllabus, I give you the wider picture. I am not giving you the particular specific CAT related CAT previous years examples, because then your horizon will narrow down. Here we have to, while we are decoding the syllabus, we have to keep our horizon wider, and while studying also. So while studying also, we have to keep our reading material comprehensive also. So that's what I'm saying. Then the paragraph completion, which is again sentence completion kind of thing, that in sentence completion there can be a single sentence, but where in the paragraph what they can, there will be 1 2 3 4 4 to 5 vacancies can be there, fill in the blanks can be there. It's like जब हम 10th में थे तो हम fill in the blanks है, 9th में थे, 8th में थे, प्रीवियस क्लासेस में थे, छोटे क्लासेस में थे, तो हम fill in the blanks करते थे ना, कि fill in the blanks, so that तो वो fill in the blanks भी आ सकता है, तो उसको बोलते हैं पैराग्राफ कंप्लीशन, कि fill in the blanks दिए हैं मोस्टली, fill in the blanks again it is vocabulary, grammar and that based question. तो आपकी एक तो आपका कहना चाहिए कि इंग्लिश ग्रामर कैसा है, कि आपका सेंटेंस कंप्लीशन कैसा है, वो चेक करने के लिए आप वेदर यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, कि पहले नाउन प्रोनाउन और वर्ब आता है, और फिर अगर पोर्शन आता है, या फिर आप पता चला पहले वर्ब को रख दे रहे हैं, पहले वर्ब किस कंडीशन में आता है, देन यू नो दिस और नॉट। तो दे आर एक्चुअली चेकिंग योर स्ट्रक्चरिंग ऑफ द सेंटेंस, कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग आ रही है, आपको अंडर under completive condition you are able to think the right sentence or not. What happens when we are under compulsion, जब हम stressful situation में होते हैं, we don't follow the structure, we sometimes forget about the structure, and that's what also they are checking, that whether under the stress, क्योंकि अगर under stress आप perform करना है, it means you have a very good hold of that thing. So that is about paragraph completion. They are checking those things. Then vocabulary उसमें थोड़ा कम ही चेक होता है, but mostly I would say it's about grammatical things, your grammatical knowledge, your again the analytical skill, तो पूरा CAT में analytical and understanding skills तो आपकी चेक ही हो रही हैं. So that's one of the thing, right? Vocabulary, all these in all our topics, the vocabulary is helpful. But again, as I said in my previous videos, it doesn't mean then you start reading some of the very heavy books on the vocabulary and start mugging up or not learning the exact meaning, because the exact meaning generally nowadays in the CATs are not being asked. वो फिर दूसरे एग्जाम्स जो हैं उनमें हो सकता है पूछा जाता है, लेकिन कैट में आपको कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ज्यादा पूछा जा रहा है. तो इसलिए कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, और मॉक टेस्ट, और आपको कोचिंग और गाइडिंग जो मटेरियल आपको मिल रहा है वो सॉल्व करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और आपके अराउंड जो हो रहा है जो उसको आपको कॉम्प्रीहेंड करना सीखना पड़ेगा. दैट्स व्हाट वी
uh, one has to do uh, for getting a good percentile in the uh, in section 1. So this is about decoding the section. If you have any questions and answers, you can write in the comment section. It's not necessarily right now. Whenever you are watching this video, you can write the, we will try to answer those questions in our subsequent videos. So that's why one of my requests, that if you want any clarification on any of the topics which we have discussed today or in the previous videos, you can write in comment box. We will pick up the answers from there. We will pick up the questions from there, and we will try to answer your queries, and we want to serve you on that, right? So that is one thing. I have also starting from today one very unique initiative. आई डोंट नो अबाउट अवर्स, बट इस प्लेटफॉर्म पे हम एक यूनिक इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, और वो यूनिक इनिशिएटिव है कि आई वुड गिव यू वन क्वेश्चन ऑफ द डे. ठीक है, क्वेश्चन फॉर द डे, QFD उसको हम बोलेंगे. तो QFD मतलब क्वेश्चन फॉर द डे, और वो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर कैट या फिर GMAT, ऐसे जो एग्जाम्स हैं, जो मैनेजमेंट स्टैंडर्डाइज मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, जैसे कि कैट हो गया, GMAT हो गया, सैट हो गया, इनसे हम लेंगे. ठीक है, और उनका एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एंड दैट इज होमवर्क फॉर यू, एंड आप उसको भी आंसर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कि उसका आंसर क्या होगा, एंड वी कैन डिस्कस दैट इन दी सब्सिक्वेंट वीडियो. मतलब जो भी उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, तो वो उस वीडियो में हम उस QFD को डिस्कस कर सकते हैं. आपको कोई FD से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमसे रीच आउट भी कर सकते हैं. आई विल प्रोवाइड यू द नंबर इन द लास्ट, राइट? तो वो आप कर सकते हैं. आप QFD को, वीडियो को पॉज करें और QFD को जरूर अटेंड करें. सो क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन फॉर द डे of the day, question of the day is or question for the day is that 4 sentences leveled below, when properly sequenced, would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequencing of the order of the sentences and key in sequence of the 4 numbers as you answer. की इन मतलब ये टीटा टाइप का क्वेश्चन होगा. की इन मतलब कि आपको टीटा टाइप क्वेश्चन दिया गया था, ये कि टीटा में मतलब आपको यहाँ MCQ नहीं दिया गया है, आपको इसका अरेंजमेंट सोचना है, और वो फिर कीबोर्ड में लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, वो कीबोर्ड में आपको लिखना है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज फिश स्किन कोलेजन हैज एक्सीलेंट thermostability and tensile strength, making it ideal for use as bandages that adheres to the skin and adjust to body movements. Collagen, one of the main structural proteins in connective tissues in the human body, is well known for promoting skin regeneration. Then third option is fish skin swims in air as disease and bacteria that affect fish are different from most human pathogens. The fourth option is the risk of introducing disease agents into other species through the use of pig and cow collagen proteins for wound healing has inhibited its broader application in the medical field. So this is our the question of the day, right? We have not discussed till now the parajumbles. Maybe we may discuss that in subsequent lectures, and that's why I've given you a question on the parajumble, so that you get an idea what does parajumbles mean and what kind of questions in parajumbles are being asked nowadays. Please try this question at your home and type the answers in the comment section below. Thanks for listening. If you want to connect with us, here on the screen, I'm providing you the number for the contact number to connect with you. You are most welcome to connect with us and take the guidance and mentoring from us. We will be happy to serve you. And that's all for today's video. I hope that you like this video. If you like our content, and if you like our initiative, please do share it with your friends and hit the subscribe button, hit the like button, so that we
we can come and we shall be motivated uh, to bring more and more such initiative in future. That's all from today's session. Thank you very much.